गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। लर्नर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स पे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जीरो चैप्टर्स के मेरे 2-3 टॉपिक छूट गए उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। हैज़ बीन के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अब समझते हैं कि हैज़ बीन जो है ये क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़रूरी है। तो हैज़ बीन का जो इस्तेमाल होता है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में किया जाता है। बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है। राइट नाउ वी हैव टू ट्रेन अवर टंग एंड वी हैव टू एक्वायर अ लिटिल बिट बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जिससे हमारा इंटरेस्ट आ जाए और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल जाए। उसके बाद फिर हम डिटेल में सारी चीज़ों पढ़ेंगे। अब देखिए, हैज़ बीन का इस्तेमाल एक ऐसे पर्टिकुलर समय के लिए होता है, जैसे वर्तमान में कोई काम शुरू हुआ और अभी चल रहा है। जैसे क्या राहुल 3 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है, मतलब 3 महीने पहले काम शुरू हुआ और अभी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैज़ बीन का इस्तेमाल। मैंने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? रिवाइज करते जाइए। ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं, इसमें 2 चीजें हैं, यही पे बता देता हूं। सिंस और फार का इस्तेमाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंग्लिश में, और लोग एमए इंग्लिश करने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, ये कहाँ पे सिंस लगाएं, कहाँ पे फार लगाएं, बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द रियल कॉन्सेप्ट। तो आप समझ लीजिए, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम इंग्लिश में सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये तो किताब में, गाइड में इधर आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। अब निश्चित समय होता क्या इंग्लिश में, ध्यान देना। सुबह, शाम, बचपना, बुढ़ापा, जवानी, दोपहर, ये सारी चीज जब पिछले शब्द आ जाए तो ये निश्चित समय आ जाता है, इसके लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। और याद रखना, घड़ी के समय के नाम के पहले, वर्ष के नाम के पहले, दिनों के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले, ये सब निश्चित समय को हम सिंस में रखते हैं। सिंस का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है। जब एग्जांपल देखेंगे तो सारी चीजें हमें फैक्चुअल समझ में आएंगी। फॉर का जो इस्तेमाल होता है ये अनिश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए। जैसे 2 घंटे से एक अवधि बता दी जाए, 2 महीने से, 10 सालों से, 50 वर्षों से, बहुत महीनों, कई महीनों से, बहुत लंबे समय से, ये अनिश्चित समय होता है। इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जब हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे, टेंस पढ़ाऊंगा, तो और डिटेल में सारी चीज़ को अपन फोकस करेंगे। अभी स्पोकन इंग्लिश के 0 चैप्टर्स में आते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हैज़ योर फादर बीन अर्निंग मनी फॉर 5 months? क्या आपके पापा, थोड़ा सेंटेंस बड़े रहेंगे इसमें, क्या आपके पापा 5 महीने से पैसे कमा रहे हैं? कमा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस, माई फादर हैज़ बीन अर्निंग मनी फॉर 5 months। नहीं कमा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? नो, माई फादर हैज़ नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर 5 months। हैज़ राधा बीन डूइंग MBA from Pune for 2 years? Yes, Radha has been doing MBA from Pune for 2 years. नेगेटिव क्या होगा? No, Radha has not been doing MBA from Pune for 2 months. Has your mother been cooking food since 8 o'clock? Yes, my mother has been cooking food since 8 o'clock. No, my mother has not been cooking food since 8 o'clock. Has सरला बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर 10 years? क्या सरला 10 साल से बॉम्बे में रह रही है? यस, सरला हैज बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर 10 years। नेगेटिव क्या होगा? नो, सरला हैज नॉट बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर 10 years। हैज योर मदर बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours? क्या आपकी मम्मी 2 घंटे से पत्र लिख रही है? यस, माई मदर हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। नेगेटिव क्या होगा? No, my mother has not been writing a letter for 2 hours। Has Mona been speaking English for 10 minutes? क्या मोना 10 मिनट से अंग्रेजी बोल रही है? Yes, Mona has been speaking English for 10 minutes। No, Mona has not been speaking English for 10 minutes। Has Mr. Verma been living in this colony for 5 months? क्या मिस्टर वर्मा इस कॉलोनी में 5 महीने से रह रहे हैं?
Yes, Mr. Verma has been living in this colony for 5 months. Negative क्या होगा? No, Mr. Verma has not been living in this colony for 5 months. Has your sister been earning money honestly for a long time? क्या आपकी बहन बहुत लंबे समय से ईमानदारी से पैसा कमा रही है? Yes, my sister has been earning money honestly for a long time. No, my sister has not been earning money honestly for a long time. Has Radha been swimming in the river since morning? क्या राधा सुबह से तैर रही है? Yes, Radha has been swimming in the river since morning. No, Radha has not been swimming in the river since morning. Has your younger brother been learning English in guaranteed coaching class since January? Yes, my younger brother has been learning English in guaranteed coaching class since January. No, my younger brother has not been learning English in guaranteed coaching class since January. Has your father been going to office for 10 days? क्या आपके पापा 10 दिनों से ऑफिस जा रहे हैं? Yes, my father has been going to office for 10 days. नेगेटिव क्या होगा? No, my father has not been going to office for 10 days. Has Wasim Khan been teaching English since 2001? क्या वसीम खान 2001 से अंग्रेजी सिखा रहे हैं? Yes, Wasim Khan has been teaching English since 2001. No, Wasim Khan has not been teaching English since 2001. Has your father been driving car carefully for 20 minutes? Yes, my father has been driving car carefully for 20 minutes. No, my father has not been driving car carefully for 20 minutes. Has your sister been living in Bombay for 10 years? क्या आपकी बहन बॉम्बे में 10 साल से रह रही है? Yes, my sister has been living in Bombay for 10 years. No, my sister has not been living in Bombay for 10 years. Has Radha been going to Kanan Pendari for a long time? क्या राधा बहुत लंबे समय से कानन पेंडारी जा रही है? Yes, Radha has been going to Kanan Pendari for a long time. नेगेटिव क्या होगा? No, Radha has not been going to Kanan Pendari for a long time. Has your sister been watching this video for 20 minutes? क्या आपकी बहन 20 मिनट से इस वीडियो को देख रही है? Yes, my sister has been watching this video for 20 minutes. नेगेटिव क्या होगा? No, my sister has not been watching this video for 20 minutes. ये तो आंसर देने का तरीका हुआ. अब हम देखते हैं सिचुएशनली कुछ क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं. लेट्स लर्न इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. आओ पूरे विश्वास के साथ अंग्रेजी सीखते हैं. हैज योर मदर बीन ऑफरिंग नमाज 5 times in a day since her childhood? No, my mother has not been offering namaz 5 times in a day since her childhood. Has your brother been asking you question for a long time? Yes, my brother has been asking me questions for a long time. Has your driver been coming on time for 2 months? No, my driver has not been coming on time for 2 months. Has your father been following the lockdown for 2 months? Yes, my father has been following the lockdown for 2 months. Has Rachna been teaching English in this coaching class since 2010? No, Rachna has not been teaching English in this coaching class since 2010. Has your mother been preparing breakfast since 6 o'clock? Yes, my mother has been preparing breakfast since 6 o'clock. Has Radha been doing MBA for 2 years? Yes, Radha has been doing MBA for 2 years. Has Mona been teaching English for 5 months? Yes, Mona has been teaching English for 5 months. Has she been going to guaranteed coaching class
since 5 o'clock? Yes, she has been going to guaranteed coaching class since 5 o'clock. Has your sister been singing a song for 10 minutes? No, my sister has not been singing a song for 10 minutes. Has Neha been dancing in English songs for a long time? Yes, Neha has been dancing in English songs for a long time. Has Deepak been improving his English since morning? Yes, Deepak has been improving his English since morning. Has Rahul been trying to pass the exam since January? Yes, Rahul has been trying to pass the exam since January. Has this boy been playing cricket since afternoon? Yes, this boy has been playing cricket since afternoon. Has Mona been paying her fees on time since September? Yes, Mona has been paying her fees on time since September. Has your best friend inviting you in his birthday for many years? Yes, my best friend has been inviting me in his birthday for many years. Has the child been weeping since morning? No, the child has not been weeping since morning. Has Mr. Verma been operating his laptop for 5 hours? No, Mr. Verma has not been operating his laptop for 5 hours. Has Sarla been talking to you in English for a long time? Yes, Sarla has been talking to me in English for a long time. Has Deepak been getting late for 10 days? Yes, Deepak has been getting late for 10 days. Has your elder brother been talking in English politely for many years? Yes, my elder brother has been talking politely for many years. Has she been improving her English for 10 months? Yes, she has been improving her English for 10 months. Has your younger brother been attending spoken English class since 6 o'clock? Yes, my younger brother has been attending spoken English class since 6 o'clock. Has Radha been cooperating you in learning English for 3 months? Yes, Radha has been cooperating me in learning English for 3 months. Has that child been going to college for 4 months? Yes, that child has been going to college for 4 months. Has she been clearing her doubt for a long time? Yes, she has been clearing her doubt for a long time. Had she been recording a video for 2 hours? Yes, she has been recording a video for 2 hours. Has Rachna been singing a song for an hour? No, Rachna has not been singing a song for an hour. Has she been going to the temple for 30 minutes? Yes, she has been going to the temple for 30 minutes. Has Mukesh been talking to you in English for a long time? Yes, Mukesh has been talking to me in English for a long time. Has your teacher been giving you good response for 5 months? Yes, my teacher has been giving me good response for 5 months. Has your grandmother been telling you a story since morning? No, my grandmother has not been telling me a story since morning. Has that boy been running fastly for a long time? Yes, that boy has been running fastly for a long time. Has Wasim Khan been recording an important video at the time of has Wasim Khan been recording a video for 20 minutes? Yes, Wasim Khan has been recording a video for 20 minutes. Has your sister been giving you money
for 2 months? No, my sister has not been giving me money for 2 months. Has that shopkeeper been arguing with his customer for 10 minutes? Yes, the shopkeeper has been arguing with his customer for 10 minutes. Has she been talking to you confidently since 4 o'clock? Yes, she has been talking to me confidently since 4 o'clock. Has Mona been operating his mobile for a long time? Yes, Mona has been operating her mobile for a long time. Has Deepak been playing football since afternoon? Yes, Deepak has been playing football since afternoon. Has she been watching this video for 10 minutes? Yes, she has been watching this video for 10 minutes. तो उम्मीद करता हूँ कि सिंस और फार का कुछ हद तक इस्तेमाल अगर 2% 5% भी आपको समझ आया है तो आप समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ये 2-3% ही आएगा स्टार्टिंग में, कोई 100% कोई बोलता है हम इतने दिन में सिखा देंगे, 90 दिन में सिखा देंगे, 45 दिन में सिखा देंगे, ऐसे बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम to get perfection, to speak confidently, to improve your vocabulary, to learn the art of speaking. Art of speaking is an art. बोलना एक कला है. It will be developed day by day. No one can learn over the night. कोई भी आदमी रातों रात नहीं सीख सकता. Thank you very much for watching this video carefully and giving me your valuable time and supporting me. If you are new in the channel, please subscribe my channel Wasimullah Khan Guaranteed Coaching Class Bilaspur. Thank you very much for watching this video once again. See you again at the next video.